So these are some of the things which will be most required mostly in our when we'll go to work. Okay, so but these are something which our school and college doesn't teach. So today we'll be beginning with the most famous session from the Inspire. When we were in the first year, me, Vinayak sir, the Sanchit sir, and all this, Swapnil sir. When we were in the first year, we also attended it, and it was really a life-changing experience for us. We learned many new things. We learned how to use time effectively. So today also we're beginning with the device. Okay. Is my screen visible? Yes, sir. So the device is basically discover yourself. इसमें हम क्या करेंगे अपने बारे में अंदर के बारे में और भी जो अपने बारे में जानेंगे जैसे हमें स्कूल में पढ़ा दिया जाता है किसी चीज का डेफिनेशन तो डेफिनेशन तो जान गए उसके जैसे मान लीजिए विदिशा का जो कॉलेज के बाहर वाला अपना रास्ता है उसका नाम उसके बारे में पूछें कि आप उसका क्या आप उस रास्ते को जानते हैं तो आप बोलेंगे हाँ उस रास्ते का नाम सिविल लाइंस है क्या बस नाम जानने से ही हो गया नहीं वैसा तो ही होता है बस नाम जानना इज नॉट ओनली नोइंग एवरीथिंग अबाउट इट राइट सो दैट इज ऑल्सो द केस विथ आवर सेल्फ ऑल्सो स्कूल में हमें पढ़ाई बताया जाता है फिजिकल फिटनेस में हमें बताया जाता है but there are some things which the school and colleges doesn't teach right like they don't teach you about how to manage like many of us like go into depression phase like we don't feel good all the time like कभी कभी पढ़ाई का प्रेशर बढ़ जाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता या उस समय फिर कैसे हैंडल करें अपने बैड फेज को व्हाट शुड वी डू ये सब स्कूल कॉलेजेस ये सब नहीं बताते तो बेसिकली डिस्कवर योरसेल्फ में हम यही जानेंगे क्या होता है कैसे होता है हाउ वी मैनेज ऑल दिस थिंग्स राइट see as a driver drives a car soul drives a living body साइंट जैसे ड्राइवर कार को देख लीजिए जैसे कार खड़ी है तो कार खड़ी रहने से तो नहीं चलती ना उसको कोई ना कोई चलाने वाला होना चाहिए कार खड़ा है पार्किंग में वैसे ही it will remain as it is standing until and unless a driver gets into and starts driving the car ऐसे सिमिलरली अगर एक एरोप्लेन एयरपोर्ट पे खड़ी है तो उसमें जब तक एक पायलट अंदर जाके उसको चलाता नहीं है तब तक वो उड़ने वाला नहीं है या फिर ऐसा तो नहीं है कि अपने आप उड़ने लगेगा प्लेन कभी देखा है प्लेन अपने आप उड़ गया बिना किसी पायलट के किसी ने देखा हो तो लिख सकते हैं चैट बॉक्स में अनम्यूट करके बोल सकते हैं नहीं बेसिकली ऐसा नहीं होता है सो सेम है हमारे शरीर में अगर सोल इज द जैसे एक ड्राइवर एक कार को चलाता है कार को ड्राइव करने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ड्राइवर पे है वैसे सिमिलरली हमारा जो लिविंग बीइंग बॉडी है उसका भी हम जो रह रहे हैं हम जो whatever action we are performing there is a soul behind it okay so matter is dead while the soul is conscious the soul is superior to matter okay so अच्छा आप में से कितने लोग सोल के बारे में जानते हैं कि एवर हर्ड द वर्ड सोल so can anyone of you unmute and explain in one two line what is soul anyone okay no problem the soul yes yes please Sir, it is something within every human that directs us to do the works. yes yes it is basically that only
Yes, it is basically that only. It is what drives our body. It is which directs us how to do work. Mainly आत्मा इसे ही soul कहते हैं. Okay, so in Hindi we call it that one. Okay. Similarly, a matter is dead while the soul is conscious. हमारा जो शरीर का matter है वो it gets dead, but the soul is eternal. It is always there. Okay, so can anyone tell what is this picture of? From where this picture is taken? Write in the chat box. Can write in the chat box. Hmm. Okay, this picture is taken from the battle of Mahabharat. So, yes. So initially, in the starting of the Mahabharata, you can see that Arjun was not in a good mood to fight. Arjun was depressed. He was distressed. He was feeling lonely. He was not motivated. He was demotivated. He was depressed. I told distress. So he was having all the negative qualities which you can imagine. Okay, but then the supreme. Yes. Arjun says, my whole body is trembling, my hair is standing on end, my bow Gandhi is slipping from my hand, and my skin is burning. So you can see Arjun was such a great fighter, brave fighter, the most fluent warrior the world has ever seen till now. Okay. So and he says that my body is trembling, my hair is standing on my hand, my Gandhi is slipping. Yes, can how how many of you know what is Gandhi? Or can anyone say? Yes, basically, okay, let me say. Gandhi was the weapon, the bow used by Arjuna. The name was Gandhi. Okay, so Gandhi was slipping from his hand. You can see amount of nervousness he had. That is weapon which he used to fight is slipping from his hand. His skin is burning, so he was in so much depressed mood. And then what Arjuna had lack of confidence. Arjuna had anxiety. Arjuna was demoralized. He was stressed, and he was in state of depression. But after, but there was something in between which made Arjuna emerge victorious. So what was that? Yes, can anyone say? Yes, Divyang has written Gita Gyan. Yes. So Lord Krishna gave Arjuna the Gita Gyan. He gave the most powerful speech with the most powerful knowledge ever, the Gita, the knowledge of Gita. You can see how Arjuna moved from this stage to that stage. So if you can believe in this, then this whole device is based on that only. If you can believe that what Gita has transformed Arjuna from this, he had all the negative points to emerging victorious in the war. Then this whole device is based on the Gita itself. So you can see how Gita changed. Many politicians like Radha Krishnan, Mahatma Gandhi, and many scientists like Albert Einstein and many other scientists believed in Gita. They wrote good points about the Bhagavad Gita, that how it changes the life. It can change the life of an Arjuna, the brave warrior. Arjuna was depressed. Arjuna was demoralized. Despite that, he emerged victorious. आप समझ सकते हैं. But how this happened? Because the Lord Krishna gave him the knowledge of the soul. He got the knowledge of the soul from the Lord Krishna himself in the Bhagavad. So basically, the main part of our DYS 1 will be okay. So basically, the main part of our DYS 1 will be we have divided it into several points. Like the first one will be, am I a matter or am I a spirit? क्या है, मैटर है या स्पिरिट है.
दूसरा साइंटिफिक प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ आवर स्पिरिट सोल। लाइक जैसे बहुत जन है ना अभी कॉलेज में भी आते हैं, तो कॉलेज में क्या है, मतलब बाहर भी जाएंगे आप तो कुछ बात बोलेंगे तो जैसे कोर्ट में चले जाइए आप, कुछ जज भी बोलेंगे, लॉयर वगैरह, प्रूफ दो, हर चीज का प्रूफ मांगते हैं। जैसे आप आजकल तो ये भी हो गया कि आप किसी को बोलेंगे कि ये फोन है, तो फिर सब बोलेंगे प्रूफ दो कि ये फोन है। तो सब प्रूफ देना पड़ेगा कि जैसे फोन लग रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, वगैरह वगैरह करके कि हाँ चलो ये फोन है। तो हर चीज का प्रूफ मांगता है हर जगह। सो इसी प्रकार आज हम देखेंगे साइंटिफिक प्रूफ दैट यस देयर इज अ सोल विच इज एग्जिस्टिंग। थर्ड वन इज द डिफरेंस बिटवीन अ लिविंग पर्सन एंड अ रोबोट। रोबोट तो आप लोग जानते ही होंगे, रोबोट और लिविंग पर्सन में डिफरेंस है। Fourth is the mechanism of mind, and fifth is the practical benefit of knowledge of soul in everyday life. अगर हमारे पास soul का knowledge हो कि हम if we know what is soul, what is the purpose of soul, what will be the practical knowledge we will have. So first, let's move fast. Let's come to the first one. Am I matter or am I a spirit? Okay. So who are you? Can anyone say? Sorry. Can anyone say Both. who are you? Both. What both? So matter and soul both there. Yes. Anyone else then? Saurabh? Anyone else want to say anything? Okay. Saurabh, basically Saurabh wants to say that we are both combination of matter and soul, spirit, right? So one very famous professor of anatomy, Dr. Harry Moneson from Ellison College of Medicine, he says that see, you can see on the right side calcium, phosphate, potassium, sulfur. So our human बॉडी इज बेसिकली, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है इस इन केमिकल से ही बना हुआ है। मतलब उसमें 5 पाउंड कैल्शियम है, जो मैटर है उसमें 5 पाउंड केमिकल है, 1.5 पाउंड फॉस्फेट है, 9 आउंस ऑफ पोटेशियम है। सो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, जो मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी आर ऑल दिस थिंग्स, राइट? मैग्नीशियम, सोडियम, दिस आर द मेन कंस्टिट्यूएंट। सो if we if we gather all these elements, chemicals, and sell it in the market, the cost price will be ₹110. So क्या हमारे शरीर का 110 रुपए भाव है, मूल मतलब is our cost of our body only ₹110? Do you agree? Yes or no? No, sir. इसका मतलब फिर हम लोग मैटर नहीं है, क्योंकि अगर हम मैटर है, इफ वी आर मैटर, then our material body or the skin and all the organs without soul, this has all these chemicals in it, and इसका कीमत बाजार में 110 रुपए है। पर ऐसा नहीं है, we all know that we are at least not 110 rupees, right? Like right, क्या हमें नहीं लगता कि हम इस केमिकल से कुछ ज्यादा ही है? सबको लगता है, yes, लगता ही होगा आप लोग को भी। ऐसे 110 रुपए सुने में तो है, इतने इतने सस्ते तो नहीं है। 110 में तो आजकल कुछ नहीं आता। You can see this actress, living beauty. When she was living, she was so beautiful. She was everyone was fan of her. Everyone used to uh, what they say, everyone used to go and watch her film. What they say, first day first show, first day first show, they used to go and watch first day first show. She was so beautiful, people were mad. I have even seen some people, they were like permanent tattoo of her name on the hands and everywhere. But when after she died, like you can see the condition of the material body, right? So the chemicals are the same, like the materials are the calcium, phosphorus, potassium,
all the elements are same, still the same in the body as it is, but what has gone? The feelings. There are no more feelings left. The body has lost the ability to think. The body has lost the ability to think. The body has no desires left. Okay, 1 second. The body has no consciousness, no movement. In fact, even if you can see, like if इन द लिविंग बॉडी तक आप तो सब जाके मिलना चाहेंगे कि अच्छा चलो लिविंग है, पर डेड बॉडी के पास आप लोगों को भी खड़ा कर देंगे तो पीपल विल एक बार हिचकिचाएंगे कि नहीं नहीं हमें इधर नहीं जाना, वी डोंट वांट टू गो देयर, लाइक आप समझ सकते हैं. She has no movement, no consciousness, nothing, right? So similarly, the body is the same, but the soul is gone. The soul of the body has departed. So when the soul is gone, all these things have gone. So you can understand the value of the soul. Bhagavad Gita 2.20 states in the second chapter 20th verse it is said that for the soul there is neither birth nor death at any time. The soul never dies. You can see how the soul is moving. The soul is moving from body of a infant to a child, then to a young boy, adult, middle-aged man, old-aged man, and then finally the body dies. But when the body dies, the soul doesn't die. The soul moves on to the new body. You can see from here. See how this is going. So what is the difference between a body and a soul? Body is matter, but soul is spirit. The body has no consciousness. The soul is conscious. The body changes, like we changes our body, like we changes our body, अभी हम शरीर हमारा चेंज होता है, जैसे हमारा जो बचपन में शरीर था वो अब नहीं है. अभी पहले बचपन में छोटे छोटे हाथ थे, छोटे छोटे पैर थे, अब नहीं है. छोटे आँख, छोटे ना, अब सब बड़े हो गए हैं, फिर बूढ़े होंगे, फिर when we become old we'll have our में झुर्रियाँ आएंगी. सो आवर बॉडी चेंज बट द सोल डज नॉट चेंज. ऐसा सुना क्या कि बचपन में अलग आत्मा था, फिर बड़े हुए तो अलग सोल आ गया अंदर में? नहीं, ऐसा नहीं होता. द सोल रिमेन एज इट इज. Yes, the soul remain as it is. The body is temporary, we get our body very like the body is temporary. Our body is temporary in this world, we are not here forever. Like हमारा एक fixed age रहता है, जैसे 70, 80, 90 साल, 100 साल, एक फिक्स्ड एज होता है. बट सोल का तो ऐसा नहीं होता. सोल इज इटर्नल. हमारा पिछले जन्म भी जो था वो उसका सोल वाज देयर, एंड द नेक्स्ट जन्म भी होगा, उसमें भी हमारा सोल रहेगा. बॉडी बिकम्स डेड आफ्टर सम टाइम, लाइक आई सेड 70, 80, 90 जितने भी साल है, उसके बाद हमारा जो बॉडी है वो डेड हो जाएगा. बट सोल के साथ ऐसा नहीं है. द सोल इज ऑलवेज देयर. You are not the body that you see in the mirror. You are the Atma, the soul, the real driver of the body. लिखा. तो इसमें ये कहने का मतलब है कि हम बहुत ही बार क्या होता है कि हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि हमारा जो बाहरी शरीर है, द आउटर बॉडी व्हाट वी हैव इज आवर ओन आइडेंटिटी. बट ऐसा नहीं है. हमारे अंदर का जो सोल है, वी आर द इनर सोल विच वी आर ड्राइविंग आवर बॉडी. ओके, सो वी आर नॉट जस्ट आउटर बॉडी विच वी बेसिकली सी. वी आर मोर देन दैट. You are the driver of the body.
So what is the material point of view? Material, one second, there's some problem in the screen sharing. So now is the screen visible? Okay, hope it is visible. So we are the material body made of a matter. We are no more than a chemical bundle. Everything is finished at the time of death. So this is the material viewpoint. अगर हम अपने शरीर को एक मैटर समझ के मूल्यांकन करें शरीर का, तो हम उसमें मेनली ये 3 निष्कर्ष निकाल पाएंगे। जैसे कि पहला, हमारा ये जो शरीर है ये एक मैटर से बना हुआ है। दूसरा कि इसमें जो कैल्शियम का भी नाम बताया था, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, फॉस्फेट, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं है हमारे शरीर में जो है बस यही है। तीसरा, जो मृत्यु के समय है ये सब खत्म हो जाती है। जैसे मृत्यु के टाइम हमारे जो कर्म है, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, या जो भी और किए रहते हैं, all these things gets vanished at the time of death. This is, अगर हम अपने शरीर को मैटर समझ के मूल्यांकन करें तो ये 3 निष्कर्ष है मेनली जो उस समय हम निकाल पाएंगे। बट अगर हम अपने बॉडी को सोल समझ के, स्पिरिट सोल समझ के मूल्यांकन करें तो हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे? पहला, वी आर नॉट द मटेरियल बॉडी ऑफ फ्लेश एंड बोन्स। हम इस हड्डी और मांस से बने हुए मटेरियल बॉडी नहीं है। दूसरा, वी आर स्पिरिट सोल इंगेज इन दिस मटेरियल बॉडी। दूसरा, हम जो है एक सोल है, वी आर आत्मा, द जीवा, जो इस शरीर के अंदर है। तीसरा, वी डू नॉट डाई व्हेन मटेरियल बॉडी स्टॉप्स टू फंक्शन। जैसे अभी हमें एक शरीर मिला है इंसान का, तो जब ये इंसान का शरीर खत्म हो जाएगा तो हमारा भी अस्तित्व ऐसा नहीं है कि तभी खत्म हो जाएगा। वी डू नॉट डाई व्हेन द मटेरियल बॉडी स्टॉप्स टू फंक्शन, राइट? जैसे आप देख सकते हैं एक पिक्चर में कैसे एक चिड़िया एक पिंजरे में कैद है। लाइक अ बर्ड इज कैद इन द, क्या बोलते हैं, केज। बट ये चिड़िया पागल की तरह आजाद होना चाहती है। चिड़िया का और आ जाए। एक चिड़िया का फितरत होता है आकाश में खुलेआम उड़ने का। चिड़िया नहीं चाहती कि वो पिंजरे में बंद रहे, कैद नहीं चाहती है कोई चिड़िया। ठीक इसी प्रकार हमारा जो सोल है, व्हाट आवर आत्मा इज देयर, इट इज आल्सो ट्रैप्ड इन दिस मटेरियल बॉडी। और ये मटेरियल बॉडी जो है ये 5 चीजों से बनी है। तो क्या कोई बता सकता है कि 5 चीज क्या है? कैन एनीवन से व्हाट आर दिस 5 थिंग्स? कैन एनीवन, क्या कोई बता सकता है? म्यूट करके फ्रॉम चैट बॉक्स ऑनली। नो वन? ओके। तो जैसा कि जब आदमी मरता है तब भी आप देखे होंगे, या फिर व्हेन द पीपल डाई आल्सो दे से पंचतंत्र में विलीन कर दिया गया। तो यही है वो 5 चीज इससे शरीर बना है और बाद में इसी में चला जाता है। दीज आर अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। ये है 5 चीज जिसमें शरीर बना है और इसी में शरीर विलीन हो जाता है। और मटेरियल बॉडी इज मेड ऑफ दिस 5 थिंग्स। तो हमारा फर्स्ट पार्ट इसी में खत्म हो रहा है। नाउ कम्स द सेकंड पार्ट, प्रूफ। बहुत लोग होते हैं बस हर चीज में प्रूफ मांगते हैं कि प्रूफ दो, ये है, प्रूफ दो, वो दो, प्रूफ दो, ये है, प्रूफ दो, ये है। ठीक उसी प्रकार हम भी अभी वी आर आल्सो इन इस DYS 1 में भी एक प्रूफ है कि हम एक सोल है, राइट? ओके, सो बेसिकली 5 प्रूफ्स है
कॉमन सेंस, कॉन्शियसनेस, नियर डेथ एक्सपीरियंस एंड रीइंकार्नेशन रिसर्च। कॉमन सेंस, कितने लोग जानते हैं कॉमन सेंस क्या होता है? Yes. General knowledge. Yes, general. Yes, जनरल नॉलेज या फिर जनरल अवेयरनेस, कॉमन सेंस। लाइक जैसे अब खाई है नीचे, तो कॉमन सेंस ये ना कहेगा कि आगे एक कदम नहीं लेना, नहीं तो गिर जाओगे खाई में क्या। सो दिस Yes, इज sir. मेन, सो दिस इज मेनली कॉमन सेंस। एंड कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस इज चेतना, चेतना हमारे में चेतना होती है बहुत। लाइक एंड नियर डेथ एक्सपीरियंस, लाइक बहुत बार हुआ होगा कि मरते मरते बचे, या फिर एक ऐसा घटना हुआ जिससे मतलब सुना हुआ कि मतलब मौत के मुंह से वापस आ गए, इसे कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। एंड चौथा है रीइंकार्नेशन रिसर्च, लाइक पूर्ण जन्म, प्रीवियस लाइफ के बारे में बहुत सारे लोग मतलब रिसर्चेज हुई है साइंटिफिक लैब्स में, प्रॉपर रिसर्चेज, नॉट लाइक किसी ने उठ के कह दिया तो कोई मान लिया, ऐसा नहीं, प्रॉपर रिसर्च। ओके, पहला है कॉमन सेंस। When a person dies, we say he or she has passed away. Who has passed away? The body is still there. Okay. शरीर तो उधर ही है, उसके हाथ, उसके बाल, उसके नाखून, आँख, मुंह, नाक, सब उधर ही है। तो क्या पास हो गया, कोई बता सकता है? Soul. Yes, right. Yes, the soul, right. The soul has passed away. Exactly. तो ये हमारे कॉमन सेंस है, ये बताता है कि जैसे आप बोल, जैसे कोई पूछेगा कि सोल होता ही नहीं है कुछ, हमारा जो शरीर है ये मैटर शरीर है बस, देयर इज नथिंग कॉल्ड, तो पूछिए, पूछना होगा उससे कि ठीक है, जब कोई मरता है देन व्हाई वी से ही और शी हैज पास्ड अवे। सो व्हाट हैज पास्ड अवे? एवरीथिंग इज देयर, द हेयर इज देयर, द हैंड, द फिंगर, everything is there, the whole body, skin, everything is there. So what has passed? The soul has passed away, right? Now consciousness. Consciousness means to be aware, thinking, feeling, willing, and intentionality. Like जैसे कि अगर हम एक कैमरा को एक लाल लाइट दिखाएंगे या फिर रोशनी दिखाएंगे, तो बस कैमरा को रोशनी दिखे और कैद कर लेगा उसको, पर कैमरा उसे याद नहीं रहेगा। जैसे अगर आप एक बहुत सारी बुढ़ापे में आप वृद्ध कपल्स को देखते होंगे, तो वो लोग याद करता होगा कि अच्छा हम जवानी में ये करते थे, वो करते थे, हम इस समय ये किए थे। तो नहीं, मतलब हर चीज उनके कॉन्शियसनेस में स्टोर्ड रहता है। तो इससे प्रूफ होता है लिविंग थिंग आर कॉन्शियस, दे कैन रिमेम्बर, दे कैन जज, बट जो नॉन लिविंग थिंग है, जो नॉन लिविंग थिंग है वो बस एक बार देखता है बस, दैट्स इट एंड। उसका जो काम है, जैसे कैमरा का काम है बस लाइट को कैप्चर करना, इट कैन ओनली कैप्चर लाइट, इट कैन नॉट रिमेम्बर द लाइट, ओके, फॉर एनी पीरियड ऑफ टाइम, दैट्स इट। सो it is dead matter, it has no consciousness, whereas the living being has consciousness, it has awareness, it has thinking, it has feeling. Okay, so why living thing is conscious and why non-living thing is not conscious? Yes, because living thing has soul in it, and soul makes the body more conscious, and live and dead matter doesn't have soul, so it doesn't give them the property of consciousness. Third one is the near death experience or out of body experience. एक स्टडी हुआ था, केस स्टडी हुआ था अमेरिका में, जिसमें से मालूम था 11 to 14 of the average American population who are mentally and physically healthy have had OB, out of body experience. मतलब 100 में से हर 11 ना 14 लोगों, 11 से 14 लोगों ने एक अपने जीवन में कभी ना कभी ओबी, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, जिसमें कि वो मतलब अपने शरीर से बाहर चले गए थे, वैसा एक्सपीरियंस किया है। जैसे आप में से या किस कोई कभी भी किसी ने आउट ऑफ बॉडी या फिर नियर डेथ एक्सपीरियंस ऐसा करके कुछ एक्सपीरियंस किया है, या फिर सुना है किसी को एक्सपीरियंस करते हुए, जैसे मतलब मरते मरते बच गए,
कि आज तो मैं मर ही गया था, ऐसा कुछ। Okay. फोर्थ वन इज द रीइंकार्नेशन रिसर्चेस। जो हमारा जो पास्ट लाइफ मेमोरीज होती है, मतलब पिछले जन्म की यादें, ये तो बहुत जन बोलते हैं कि मैं पिछले जन्म में वो था, ये था, वो था। तो ये बस एक कहने की बात है कि ये था, वो था। ये तो एक साइंटिफिक प्रूफ नहीं हुआ। कहने को तो मैं भी कुछ भी कह सकता हूँ कि मैं पिछले जन्म में देश का प्राइम मिनिस्टर था, पर ऐसा मतलब कहने, बहुत जन इससे झूठ भी कहते हैं, सच भी कहते हैं। तो इसे सच क्या है, झूठ क्या है, तो इसके लिए एक रिसर्च हुआ था। Still many great scientists, like one of them is Ian Stephenson, प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में एक 3000 केसेस ऑफ रिइंकार्नेशन को रिसर्च किया था। देख सकते हैं, यू कैन सी हाउ मेनी बुक्स आर देयर ऑन रिइंकार्नेशन रिसर्च। Phobias come from the past life. This is what he concluded. Dr. Ian Stevenson, this is what he concluded from his research. Phobias are related to the mode of death of person whose life is being lived. फोबिया क्या होता है, क्या किसी को मालूम है? दैट एनीवन वांट टू से व्हाट इज फोबिया? fear, Fear. यस, एग्जैक्टली। मोर, एनीवन एल्स? एनीवन एल्स वांट टू से? ओके, जैसे कि बताया सौरभ ने कि फियर, फोबिया इज बेसिकली फियर। यस। सो जैसे अगर किसी को पिछले जन्म में कोई किसी के डूबने की मौत होती है, तो इस जन्म में उसे मतलब वाटर का फियर रहता है, उसको पानी देख के डर लगता है, स्विमिंग नहीं कर पाता, या फिर नदी के किनारे उसको ले जाओ तो फिर पानी से दूर भागता है। सो ये होता है मीनिंग। किसी को पिछले जन्म में चक्कू वक्कू मार के हत्या हुई है, तो वो फिर वेपन से उसे डर लगता है, वो चाकू छू नहीं सकता, उसे डर लगता है। दिस इज फायर आर्म्स एंड सो। ओके, skip it. We see this. A case study by Dr. Ian Stephenson. Shukla Gupta remembering her past life. Okay, can anyone क्या कोई इसे पढ़ सकता है? Can anyone read this out for me? Shukla was a little more than 5. She, Sen Gupta, and 5 other members of his family journeyed with her to Bhat- Bhatpara. When they arrived, Shukla took the lead, avoiding various possible wrong turns. She rode them straight to the house of Sri Amrit Lal Chakravarti, allegedly her father-in-law in past life. सो इसमें जैसे बताया कि शुक्ला गुप्ता जो एक 5 साल की बच्ची थी, तो उसे एक बार अपने घर के 5 जनों को लेके एक अपने गांव में ले गई वो। और वो बहुत ही मतलब उटपटांग रास्ता टर्न्स लेती थी, कभी सीधा, मतलब इधर उधर जाके, मतलब इतनी छोटी बच्ची को इतना एग्जैक्ट रास्ता कैसे मालूम? तभी उसे मालूम था, और वो एग्जैक्ट अपने उसी घर में ले गए। फिर अपने वो जो एक अमृतलाल चक्रवर्ती है, उनका उसका घर दिखाई, और बोलती, शी सेड दैट ही वाज हर फादर इन लॉ इन द लास्ट लाइफ, राइट? तो व्हाट, तो शुक्ला जो थी वो 5 साल की बच्ची थी। 5 साल के होने के बावजूद वो अपनी
पुराने पिछले जो उसका पिछला जो जन्म हुआ था वहां वो चली गई अपने वो जो अमृतलाल चक्रवर्ती है, 5 साल की बच्ची, शी आइडेंटिफाइड दैट यस दिस गाय वाज माय फादर इन लॉ इन माय प्रीवियस लव। वो सबको पहचान ली, वो ऐसे 5 साल की बच्ची देख सकते हैं, अपने पूरे घर वाले को ले जाके दिखाते हैं कि ये मेरे फादर इन लॉ थे, शी वाज इन मदर इन लॉ, शी वाज माय हस्बैंड, शी इज माय डॉटर। ऐसे ही मतलब अगर आप ये कहानी पढ़ेंगे और डिटेल में तो मालूम चलेगा उसकी डॉटर का नाम मीनू था, तो बता रही थी कि ये मेरी मीनू है, ये मेरी बेटी है। शी रिकॉग्नाइज एवरीवन, 5 साल की छोटी बच्ची, क्योंकि वो she was so much attached to that family that even in her next life she remembered. Also she हरिदाना चक्रवर्ती को अपने हस्बैंड बताई, मतलब एक 5 साल की बच्ची बताती है कि ये मेरे पिछले जन्म में मेरे हस्बैंड थे। The nickname as well as the real name of her brother-in-law, अपने ब्रदर इन लॉ का उसे अपना निकनेम भी मालूम था, रियल नेम सब कुछ मालूम था उसे। So this indicates that this is a real story. You can also search on the Google also. This is a real story. You can search on the Google also. So you can see that yes, previous life exists. Okay. So even scientists say so. Like the great scientists like Benjamin Franklin says, finding myself to exist in the world I believe I shall in some shape or the other always exist. They also believe in reincarnation. He says that I will always exist in some way or the other in my next life. John Adams says that those souls who revolted against God were placed here to transmigrate to various species of animal, birds, and reptiles. He also says these great things. Socrates also said similarly. Let's move to the third subtopics. Difference between living person and robot. Mm. Is man not just a part of computer robot? अच्छा, what is the definition of robot? क्या भी बता सकते हैं कि रोबोट का एक definition क्या है? It's just a machine which works on the commands given by a human. Right, exactly. It is just a machine which works on the command given by human. वो उतना ही करता है जितना उसे बताया गया है, जैसे कैलकुलेटर इज ऑल्सो टाइप ऑफ रोबोट, लाइक जो जिसका काम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये सब करना। So what does it do? It only perform what it has been said and what command it has been given. Like a drama is recorded by the camera. So you can see a drama is being recorded by a camera, and a drama is being observed by the judges. So what is the difference? What is the difference between these two? This camera is a robot, just human being are the human being. The lens in the camera has no experience. The human eye has experience. These judges, the great judges, they have experience. They can judge. They have the ability to judge. But the camera doesn't have the ability to judge. The camera has no emotion. When the cameraman sees the comic scene, doesn't start laughing like. But the human beings do laugh or do cry when they see emotional or comic scenes. They have emotions of elation, sorrow, anger, etc. The camera has no consciousness. The human beings are conscious. Our judges are conscious. If the camera has no judging ability, the humans are able to judge. So these are the difference between the camera and the eyes of the judges. One American man asked a great Swami who has gone to America that, Swamiji, I think our body is just a complex machine that gets worn out and crashes. Why should we bother about some soul powering the body? Then what did that Swami said?
Swami said, does your car or grow? Do you have male and female car that you can unite and produce a baby car? A living being undergoes six changes, whereas the matter just depreciate. It is the soul that makes living body alive. Yes. So he asked, the Swamiji perfectly replied to that American man that no, that we are not robot. That if our body is just a complex machine, then does machines have male version, female version? Can machine unite to produce a new machine? No, but we have this ability. So in this way, our human body is different from machine. Okay. How is the difference? How and what is the major difference between a living body and the robot? Okay. Living body undergoes six changes while matter only dwindles. A male and female living body can multiply. Similar species machine can't reproduce by one. Living body has consciousness, thinking, feeling, willing. Matter has no consciousness. What are the six changes that a living body undergoes? Birth. One is first is the birth. We all take birth. Can anyone guess the second one? Death. Death. Yes, death is one of the changes, but can you say in the in sequence में क्या आएगा birth के बाद? Death तो आएगा ही, मतलब तो है ही. सही आंसर है. ग्रोथ. ग्रोथ हम बर्थ लेते हैं, बर्थ लेने के बाद हम बड़े होते हैं. हम जैसे जन्म लेते हैं उस तरह के तो नहीं रहते. Our body also grows, our mind also grows, everything grows, right? Third is maintenance. Our body undergoes maintenance, like we all maintain ourselves so that we grow properly and such. Fourth one is production of byproducts, right? We produce a byproducts like. Fifth is dwindling. Dwindling is basically when our body deteriorates. Like one point of time there is a peak. Like in adulthood, we are at the peak, and then after that our body starts dwindling. It there is some disease. Then our body gets weak, and so that's dwindling. And then finally, as I said, death. So these are basically the six changes which our uh, living body undergoes. Okay. You can see birth, then they are growing, then this boy is playing football to maintain his body. He is reading, he's getting knowledge for maintenance. Then he is adult, then he is production, and then he is producing new baby products, like not baby products. Then he is uh, what to say, he's producing kids. Then the body is dwindling, and then finally the body dies, right? So this is a life journey of a living being. Okay, so these are basically the life journey of a living being. The next one is the mechanism of mind. Okay, so let us finish it quickly. The soul is covered by gross and subtle covering. जैसे हर चीज से कवरिंग होता है. जैसे आप क्रिकेट बॉल भी देखेंगे ना, तो उसका जो मेन चीज होता है, अगर मेन क्रिकेट बॉल जो होता है ना, लेदर वाला, उसका भी एक कवर होता है. उसके नीचे जो मेन वेट होता है बॉल का, वो सबसे नीचे में होता है, कवरिंग होता है उसका. तो सिमिलरली जो सोल है वो भी ग्रॉस एंड सटल कवरिंग से कवर किया हुआ है. ग्रॉस बॉडी क्या है? जैसे जिस 5 चीजों से हमारा जो मटेरियल बॉडी वो बना रहता है. दे आर मेड ऑफ 5 थिंग्स. So what are these 5 things? These 5 things are earth, water, fire, air, and ether. Okay, so these are the 5 things which our material body is made of. And then comes the subtle body. What is subtle body? Mind, intelligence, and false ego.
this is the second layer of the our body. Okay, so सबसे ऊपर में gross body है earth, water, fire, air and ether. Then if we go more deeper, we have three things: mind, intelligence and false ego, right? And then if we go inside, we have soul. What is soul? Eternity, knowledge and bliss. Sat Chit Anand. Sat Chit Anand. This is the transformation from gross to subtle body. What is intelligence? Intelligence is a decision maker. Mind is a storehouse of thoughts. Senses are the output machine, like ear, nose, they are the output machine. So intelligence, mind, and five senses are the mechanism of mind. इसमें देख सकते हैं कि how beautifully it is being depicted. How beautifully it is being depicted. जो हमारा जो शरीर है, इसे एक चैरियट यानी कि रथ बताया गया है. जो रथ है ये 5 घोड़ों से चलाया गया है. These 5 horses are our 5 senses. What are our 5 senses? Eyes, nose, ears, skin and tongue. These are our 5 senses. इन 5 senses को क्या कंट्रोल कर रहा है? What is controlling our 5 senses? Our mind. Our mind is controlling these 5 senses. Like eyes, ear, nose, skin and tongue. These are being controlled by our mind. And हमारे mind को क्या कंट्रोल करता है? Intelligence, right? Intelligence. How intelligence is controlling our mind? Can anyone say? Can anyone say that how our intelligence controls our mind? It's like, can anyone say what is intelligence? बुद्धिमत्ता. Right, right. So बुद्धि, so सेम है, बुद्धि है जो हमारे माइंड को कंट्रोल करता है. अगर हमारे पास सही बुद्धि होगा तो हम अपने माइंड को सही दिशा में कंट्रोल कर पाएंगे. अगर हमारे पास गलत बुद्धि होगा या तो हम गलत विल कंट्रोल आवर माइंड इन नेगेटिव वे. If we have the right intelligence, proper intelligence and good intelligence, then we can utilize it to, then we are this good then we then we can properly use this intelligence to control our mind, which will properly direct our 5 senses, which we can use for the benefit of ourselves. जैसे अगर हमारे में इंटेलिजेंस है तो हम अपने आँख will train our mind and will use that intelligence for our mind, जिससे कि जैसे हम आँख का सही इस्तेमाल कर सके. We can see good things, like we can avoid seeing bad things. Similarly, we use our intelligence. जैसे कि हम जानते हैं कि एक स्मॉल छोटा सा एग्जांपल दूंगा. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा हाउ वी कैन यूज आवर इंटेलिजेंस. जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम बुरा चीज सुनेंगे तो धीरे धीरे हम बुरा कल्टीवेट होते जाएंगे. जैसे गालियां सुनना या फिर अनाप शनाप चीजें सुनना या नॉट अपने जो मेन गोल है उसे डेविएटेड चीजें अगर सुनेंगे तो हमारा माइंड भी उसे डेविएट होने जाएगा. तो हमारा वी विल यूज आवर इंटेलिजेंस, राइट इंटेलिजेंस, एंड विल ट्रेन आवर माइंड to not to use our ear to hear all all those nonsense things, right? So similarly, that is the use of our intelligence. And all of this and the whole, this is the whole body. And who is the main hero of this body? Like the soul. You can see the soul. These all things are driving the soul. Okay. Lord Krishna says in Bhagavad Gita 6th chapter that for him who has conquered the mind is the best of friends. But for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. You can see from it. Those who has conquered the mind using his intelligence, you can see in this picture. Those who has conquered the mind or captured the mind using this his or her intelligence can use it for his betterment, can use it to improve himself,
for his betterment, for upskilling himself, for getting good job, for being good in studies, for using his time properly, for bringing the best out of him or her, for becoming a better leader. Okay, so mind is the best friend for him. And those who cannot use his intelligence to train his mind, the mind is the worst, and he will be indulging doing all the bad activities. Like he will waste his time, he will waste other people's time, he will be a burden for themselves. So what is the main summary? If you have a controlled mind, it will be your best friend. If you have an uncontrolled mind, then it will be your greatest enemy. Like mind is compared to a knife. Is the knife good or bad? Okay, this question is for everyone. Can anyone answer? सर डिपेंड करता है कि हमने किस चीज के लिए उसको यूज करना है. Yes. Yes, exactly. It depends on हम किस चीज के लिए इसको यूज कर रहे हैं. जैसे एक डॉक्टर के हाथ में एक जान बचा सकता है, पर एक बदमाश के हाथ में जान ले सकता है. So, ऐसा ये माइंड भी है. अगर हम माइंड को सही जगह यूज करें तो हमारा भला करेगा, गलत जगह यूज करें तो ये हमारा बुरा करेगा. ओके, so next comes the very powerful Gigo principle. This, okay, so if we put in garbage inside our mind, we'll take out garbage from our mind. Similarly, if we put good things in our mind, we'll get out good outputs from our mind. Okay, so this is the Gigo principle. So what are the good things? Where do we get our scripts? Like what are the inputs? Inputs are the books we read. Inputs are the movies we watch. Inputs are the music we hear. Inputs are the friends we keep. Like these are the four things which decides what good we are taking inside our mind, right? So अगर हम अच्छा books पढ़ेंगे, then surely something good will go inside our mind. If you watch good movies, then surely something good will go inside our mind. If you watch hear good music, something good will go inside our mind. If you give good friends, we'll be motivated. Something we learn, we will definitely get positive outputs from it. Okay. So these are the mental dialogue. जैसे अगर कोई एक हैबिट आता है तो उसमें हमारा मन क्या बातचीत करता है. दिमाग कहता है कि आई एम एन इंजीनियर, आई शुड नो हाउ टू होल्ड अ सिगार एट लीस्ट. देन माइंड कहेगा कि अरे भाई इंजीनियर हो, अगर सुट्टा पीना नहीं आता तो फिर क्या आता है. अच्छा चलो पीना नहीं तो पकड़ना तो आना ही चाहिए क्या. अरे फिर देन आवर माइंड विल से स्मोकिंग मेक्स मी कूल. अरे करूंगा ये करूंगा तो कूल लगूंगा, सब अट्रैक्ट होंगे, I will be cool, I will get more friends if I do this. Okay, but an intelligence thinks in our, if we have the good intelligence, that level of intelligence, it will say ये हमारे लिए अच्छा नहीं है. It is not good for our habit and neither good for our health. और हमारा तो इंटेलिजेंस हमें ये भी कहेगा कि जो आवर पेरेंट्स हैं ये करने के लिए तो कम से कम नहीं भेजे होंगे कॉलेज. Like our parent doesn't want us to see doing all these things in the college or getting us into the wrong track. So this is basically a mind field. This is what an uncontrolled and the not so intelligent mind will say, and this is what the intelligence will think. Okay. And now moving to the last part, practical benefit. What divides us? Hindu versus Muslim, white versus black, rich versus poor, educated versus illiterate, beautiful versus ugly. So these are some things like जो हमें divide करता है, अलग करता है. हिंदू मुस्लिम दोनों अलग अलग, लड़ाई झगड़ा, white black life matters करके अभी चल रहा था कुछ समय पहले. So these are what divides us. So what are these? These are bodily consciousness. अगर हम समझेंगे कि we are matter, then these are some things which will arise out. So we will fight for our superiority.
And what unites us? European, Chinese, white, black, every people united. So what unites us? People from all walks of life coming together for a higher cause, knowing that we are not this superficial body, but spiritual, like the driver is different from the car. So अगर हम समझेंगे कि हम एक material body हैं, we are made of these 5 elements, just these 5 elements, then we will be divided, we will have bodily consciousness. But if we are soul, we have soul consciousness, then we'll think that we are just not just this body, we are higher cause, we are here for the higher cause, we are not just this car, we are the main driver inside this car. So we'll have soul consciousness, we'll stand united of this. So a bodily conscious people will say that I am black, I am short, I am ugly, I am poor, I am nothing. So he's always being depressed mode that I am nothing. People are doing so great things. I can do nothing. I am poor. I am black. I am short. मुझसे कुछ नहीं होगा. पर अगर आदमी अगर ये सोचेगा कि we are soul, then he say that I am not this body at all. Okay, that I am not at all made up of this body. I am a soul. I am a pure soul. And मेरे पास बहुत ability है. I have limitless abilities. My heart is full of love, my joy, serenity, compassion for others, and many such things. So this is what if we have soul consciousness, we get more and more motivation. If we have bodily consciousness, we will have no wisdom. हम किसी को we have no wisdom, we will have no intelligence, we will become selfish, we will become harsh. We will not estimate anyone, we will always like हम किसी का वैल्यू नहीं करेंगे, we will become more and more selfish. Okay, but if we have the soul consciousness, then we'll become more tolerant. हमें टॉलरेंस आएगी, हमें पेशेंस आएगी, विल बिकम मोर कंसिडरिंग, क्योंकि हम जानेंगे कि दिस मटेरियल बॉडी इज टेम्पररी, वी आर सोल, सो we keep on changing the body but our soul remain there forever. So इससे हमारे अंदर if we know the this thing, then our we increase our intelligence, and similarly this will help us increase our good points, right? How to rightly use the resource. Like this man says that he has 1,000 crores rupees of US dollar, and he says that he can put his money in the Swiss bank so that nobody can even touch it, right? So he is in bodily consciousness, but he doesn't want his son to touch the money. Like he's so selfish, he's becoming so selfish that, and then he will give out in his car and he has no worry. It says that it's all mine. Ha, ha, ha. But he forgets that he is the body. But and this at the same time, this same human being, he thinks that if I can, he looks at the cow, they are suffering for food, they are suffering for love. So he uses his money that he uses the money for serving the cow, for giving them food, for giving them shelter. So he's properly using the resources because he knows that someday or the other this body will vanish, and if I do good deeds, then certainly it will do something good to me. Okay. So these are basically the 5 some points which we discussed. Am I a matter or spirit? First was that, then scientific proof, and difference between living being and robot, mechanism of mind, and practical benefits of knowledge also. Okay. So this was it from my side. Thank you. If anyone has any question, then he or she can ask. Can also ask in the chat box also. If someone has any question, then they can ask in the chat box. Then how can we say that's reading by Gita?
just like that. Yes, that's accept. Why? But I want to know that really black magic. Saurabh asks, what is false ego, right? So, what is basically false ego? False ego जैसे ego तो जानते हैं कि अहंकार. So, we many of times we have this false ego, right? That we are this material body. हम selfish बन जाते हैं. We become more and more reluctant towards other, that हम किसी को भाव ही नहीं देते. These are basically false ego. We become more and more reluctant, we become more and more egoistic, we are not ready to help others. This comes under the false ego. We don't think people we don't think people capable enough to talk to us. We underestimate the people. जो कहते हैं कि है ये क्या मैं आएगा मेरे से बात करने, जाओ इधर से. These are something false ego. यही अगर हमें, if we have the right knowledge, we think that yes, he is also material body, I am also material body, he is also part and parcel of this world, I am also part of parcel of this world, then we will not have this false ego, right? How to get stability of thoughts? So stability of thoughts, we cannot all of a sudden get stability of thought. It is a very big process. It is in the process, right? So if we get the right knowledge, अगर हमारा basic सही है, हमारे पास सही knowledge है, then we can surely get the stability of thoughts. Like from where we will get the right knowledge is from the many our ancient Vedic books also, like the Bhagavad Gita and all these things, like where it is said we are soul, we are not this material body. Our works, we are not dead at that, we are not finished at the time of our death. So all these things, when we slowly learn all these things, when we abide, we follow all these things, when we follow the rules mentioned in the Vedic scriptures, then see, in the process our thoughts become more and more stable, we become more mature when we know the truth of the life. So in this process, in reading all these things, in knowing all these things, in the process we get our thoughts to be more and more stable, and thus we can, like, there is no standard that if you do this you will get stability of thoughts all of a sudden, right? So it is a process. All right, so anyone else? What? Yeah, one second. Sir, Sneha is what is it? Sir, Sneha is good or not? Sir, it's sannyas. Acha, acha, sannyas. Sannyas is good or not? So sannyas in what sense? Sannyas is. सर ऐसा, सर मैं बोलूं? Please ask. सर मतलब अगर कोई संन्यास लेता है तो फिर लोग बोलते हैं कि मतलब इसको ना काम करने में मतलब प्रॉब्लम थी, ये सही से काम नहीं कर पा रहा था, तो मतलब इसने संन्यास ले लिया. और जब हम कोई स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, कोई होली बुक पढ़ते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि हमें यंग एज से भगवान की पूजा करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए. तो मतलब लेना चाहिए संन्यास, नहीं लेना चाहिए? संन्यास बेसिकली मीन्स रेनंसिएशन. जैसे कि अगर हम अपने पढ़ाई में या फिर जैसे फॉर आवर गोल अगर हम किसी चीज को त्याग कर दें, जैसे हमारे पढ़ाई लिखाई में बहुत चीज बाधा विघ्न देते हैं, जैसे कि हम गेमिंग बहुत करते हैं, गेम से संन्यास लेनी, गेम त्याग दी, रिनंसिएट आवर गेम. So this is basically sannyas. Sannyas is basically renunciation for our moving to a higher cause. जैसे हम एग्जाम में अपनी पढ़ाई में जाके और ध्यान लगे, हम बहुत बार बहुत लोग क्या करते हैं ना कि कोटा जाके पढ़ाई करते हैं, ये क्या होता है,
जेई के लिए, तो जेई के लिए कोटा जाके पढ़ाई करते, तो वो भी एक तरह से संन्यास हो गया। दे आर लीविंग देयर होम, दे आर लीविंग देयर फैमिली फॉर अ हायर कॉज, like they want to get admission in, they want to get a good marks and good rank in the JEE, so they are leaving their home, their family, they are taking so this is basically, this all things come under sannyas. Okay, so they leaving something lower for a higher cause, so this basically is sannyas, right? So yes, in that sense sannyas is definitely good, and we should practice that, right? For moving for gaining something higher, we should definitely leave something lower. Next one, yes, Ankana Litoria, you can ask. गुड इवनिंग सर। सर एक्चुअली ये पूछना था, जब सर हम कोई भी डिसीजन लेते हैं या फिर जो एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं अपने लाइफ में, तो सर कई बार हम ऑप्शंस के चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऑप्शन बेटर रहेगा हमारे लिए या फिर दूसरा ऑप्शन बेटर रहेगा। तो सर उसके लिए क्या हम कर सकते हैं ताकि ऐसी कंफ्यूजन से हम बाहर निकल सकें, डिसीजन मेकिंग हमारी और एफिशिएंट हो सके। पहला बात, डिसीजन मेकिंग को और एफिशिएंट बनाने के लिए पहला बात तो हमें थॉट प्रोसेस सही होना चाहिए कि जिस दिशा में हम सोचते हैं वो हमारा क्लियर होना चाहिए। लाइक जैसे कि अभी 12th में या फिर 10th में या 12th में कभी भी आपने डिसीजन लिया होगा कि इंजीनियरिंग करना है या कुछ और करना है, तो उसके लिए एक सही थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि इंजीनियरिंग क्यों करना है, इंजीनियरिंग से हमें क्या फायदा है, आगे जाके क्या करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे। ये सब एक देयर इज अ सेट ऑफ थिंकिंग प्रोसीड्यूर्स एंड द राइट थिंकिंग शुड बी देयर एंड डेवलप्ड विद इन अस, यस, सो दैट राइट थिंकिंग होना चाहिए, हमें सही नॉलेज होना चाहिए, वी शुड हैव प्रॉपर गाइडेंस ऑल्सो। लाइक अगर हमें एक ऐसा गाइड मिल जाए जो अगर हमें कोई ऐसा गाइड मिल जाए जो विच लाइक मोटिवेट करने के जाए डीमोटिवेट करे, देन डेफिनेटली हमारा जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स है वो कम हो जाएगी। और सॉरी, दिस आर मेनली कॉमन थिंग। हमारा अगर नॉलेज सही है देन विल बी एबल टू मेक राइट डिसीजंस। अगर if we on the right path we'll be making right decision। नॉलेज सही है इसका मतलब कि जैसे हमें इंजीनियरिंग करना है, एक शॉर्ट एग्जांपल है, तो हमारा इंजीनियरिंग के बारे में इंजीनियरिंग क्या होता है, इंजीनियरिंग कैसे किया जाता है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, अगर ये सब नॉलेज सही है देन विल मेक राइट डिसीजन। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज अगर हम अपने बारे में जानते हैं, इफ वी नो आवर वीक पॉइंट्स, आवर गुड पॉइंट्स, हमारा एबिलिटी, हमारा वीकनेस है, अगर ये सब जानते हैं देन इस सब को कंबाइन कर देंगे, देन वी कैन डेफिनेटली मेक गुड डिसीजंस फॉर आवरसेल्फ। यस सर, लाइक जैसे कि आपने कहा एक्सटर्नल चीजें हमें इफेक्ट करती हैं जब हम डिसीजन या कोई भी चीज पर सोच रहे होते हैं। तो सर एक चीज मैंने देखा था कि हम स्टेप्स बना सकते हैं। लाइक फर्स्ट स्टेप हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि सारे ऑप्शंस को कंसीडर कर लें और उनका एक लाइक हमारे माइंड में ही एक लिस्ट तैयार कर लें। देन सेकेंडली आई बिलीव दैट फिर एलिमिनेशन करके जो ऑप्शंस हमें लगता है कि नहीं है ज्यादा एफिशिएंट तो उन्हें निकाल दें। फिर सर सब्सिक्वेंटली थर्ड स्टेप में हम वही सोचेंगे बेटर या बेस्ट जो भी हमारी प्रायोरिटीज हैं उनको कंसीडर करते हुए लें। तो सर ये आप बताइए कितना प्रैक्टिकल रहेगा या फिर इसमें भी कुछ ऐड करने का गुंजाइश है इसमें भी? ऐसे तो आप जब बता रहे हैं वो दैट इज वेरी मच प्रैक्टिकल, ऐसे ही करना चाहिए। और अगर ये सब सही से करें, इफ यू नो एवरीथिंग जो हम कर रहे हैं, कि इफ यू आर फुल नॉलेज, और एकदम मतलब हमें भी मालूम है कि यस वी आर डूइंग इट राइट, और इम्पोर्टेंट थिंग हम जो जहाँ से नॉलेज अटेन कर रहे हैं ये भी एक ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए।
then definitely we are doing it right. Yes, then you can trust it. Yes, sir. Thank you. Thank you. Anyone else? Okay. Thank you, everyone. It was a nice meeting with you all. So, tomorrow we'll have tomorrow or day after tomorrow, we'll send the update on the group. Vinayak Soni sir will take DYS 2 session with you all. So today, on the basis of the session which which we conducted today, hosted today, you will be having a quiz, and the overall winner from 1, 2, 3, 4, and 5 will get some goodies and the prizes which were sent in the WhatsApp group also, right? So thank you. It was nice meeting with you all. And if you have any doubt, you can always message any of the group admins from the group. Okay. Thank you. If everyone can open their camera, we can take a screenshot of the. Everyone, please open their camera one so that we can take a picture.